So today, Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a short introduction on R and R Studio. So first we will go how to install R and R Studio on your machine, on your computer, and then we will have some basic commands in R. Basically, R language was developed from another language which was called S language. So just to share, S language was developed by Brian Ripley, who was professor in Glasgow University, and later he was professor in Oxford University. I think he died 4 or 5 years ago. He was the supervisor of Professor Dr. Akil Barni, who was the chairman and the mentor and the project director for UPIT building and fiber optics building in the University of Karachi. Myself was a student of Dr. Akil Barni from year 2001. I finished my PhD in his supervision in 2007. So by luck, I had interview in Oxford University in 2 years ago, and one of the students from Brian Ripley was like a friend of Dr. Akil Bandi, who he interviewed me as well. So it was like this is called a little world. कैसी छोटी सी दुनिया है कि लोग connected. So it was a good experience. If you have such skills, then you can meet people at that level. Okay, so our language is developed and from the S language, and S language is the foundation which is called S language for statistical modeling or statistical analysis. S language has foundations in C or C++. So whichever the language you will start, most of them have either C++ or C sharp or no, either C or C++ as their background. The fundamental development is in C or C++. So most of the statistical analysis can be done in R language free of cost, because R is free language, free of cost. Comparative to R, there are other commercial packages, commercial software which are very expensive. For statistical analysis, I prefer R over Python, because Python is more toward development rather the data analysis and data science. So we will go through a few of these stages in R. First of all, you have to download R. If I this set, सर हमारे स्टेट्स की क्लासेस होंगी क्लासेस, लेकिन अभी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल नहीं है. कराची यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस दिया है, that is saying that we will have hybrid classes. NCOC ने नोटिस दिया है, every student should be vaccinated, fully vaccinated, and their parents should also be vaccinated. तो एक दफ़ा कोरोना से निकल आया हूँ, दोबारा दिल नहीं चाह रहा कोरोना लेने का, तो मैं इसलिए ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहा हूँ, ताकि जब सिचुएशन स्टेबल होगी तो मैं फिजिकल क्लासेस पर बार बार कोरोना अच्छा नहीं है. So very simple answer. Okay, proceed. We have a new R for Windows. If you are Windows user, you can download R for Windows, 34-bit or 64-bit, depends on the machine. If you are a Mac user or Linux user, so there are R language available, R for Mac or R for Linux, Ubuntu, Mint or Red Hat, whatever, whichever OS you are using, you can download R for that. Most of us use Windows, so we will be using. Okay, so most of us will be are using Windows, so we'll continue with the downloading of the Windows software. R for Windows. 4.1.1 is the most recent one, so I will not suggest to install 4.1.1. Try to install 3.9 or 3.8.
latest issues, maybe this might have some issues, some tricks. So when you will click this, you will get a exe file. You have to install that, and after installation, you can have how I can show because okay. So after completing this installation, you will install this R software in your computer. After completing this, because R itself is a command line software. Command line means like command prompt के ऊपर काम करेंगे. So in place of that, we need a interface IDE, and then for the IDE, we have RStudio. IDE क्या होता है? IDE is the interface for a language or for some software which is shell or command line. अगर हम RStudio करते हैं download, RStudio is one of the most common IDE for R. RStudio is a set of integrated tools designed to help you be more productive with R, and you will see it is very, very productive. So we are going to do the free version. There are free versions and paid versions as well. So free version, commercial license is only $995. RStudio server, which is where after having RStudio server, you can develop your web applications and upload them on your computer. But if you want to commercial use, then you have to go for a commercial site. Commercial site पे आप अपनी web applications और web tools जो है वो upload कर सकते हैं clients के जरिए से और उसको अपने cloud service से connect भी कर देते हैं. Clouds Amazon cloud हो या Microsoft cloud हो या Google cloud हो, उससे connect करके आप उसको जैसे एक practical application जो कि different web languages के बनाई जाती हैं, इसमें एनालिटिक्स के लिए प्रॉब्लम होती है, आप आर में डेवलप करके सारी एनालिटिक्स उसमें डाल दें और आपको उनसे मतलब ईजियर सोल्यूशन कंपैरेटिव लेकिन उतना ब्यूटीफुल नहीं होता आर के अंदर. सो यू विल कंटिन्यू डाउनलोडिंग द आर स्टूडियो डेस्कटॉप विच लाइसेंस. After completing this download, you will install this R Studio on your computer, and then you will see this R on your system launchpad. So yeah, there is a lot of programming that you can do, but they are more package-based programming. So it is showing file menu, new file. Now, for this is called the program window where you can write your code. For example, I was doing some clustering, I was some journal citations modeling. This is the disease modeling. This is some football graph models. So I am doing some work. So similar to that, you can say this is the command window, and this is the output window. So you can say ये command line है, and you can have different commands here, like 2 + 3 is 5. So इस तरीके से हम simple maths तो यहीं पर ही कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं. Next thing, next is here, which is called the environment. Environment के अंदर आपके variables सेव होते हैं. For example, a is equal to 5. If I write a equals 5, if I type a equals 5, it is coming to my global environment, and I can see them as a list, or I can see them as a grid. So we have options, either a list of items or grid of items. One more thing is you can save the variables. These variables are called workspace. You can save these. I don't. We can save them. For example, if I save it, all the variables which are here, which are I can see here. For example, a is equal to 5, b is equal to 10, c equals to 15. I can save all the information here
with the save button and save it as a R data file. The file name will be .r data. This is a way, if you are working on a project, you can save your data as R data. The quality is that if your Excel file is 5 MB, R data will be maybe 500 KB or maybe even lesser than 500 KB. यानी R के अंदर डेटा सेव करने से आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, आप उसको कंप्रेस कर लेते हैं. So I suggest sometimes if you are working on a project, you can save using here as a R data file. You can import data as well. Import from Excel, import from SPSS. SPSS is a statistical software. SAS is also a statistical software. These are statistics softwares that you can use. You can download the data, import the data from text file or tables or matrices. So there are different ways. You can connect your R to a server which contains your data sets. For example, Google Analytics. आप Google Analytics कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है आर के साथ. तो होगा क्या, गूगल एनालिटिक्स का डेटा जो होगा, जो समरी है, टेबल्स हैं, जेंडर है, लोकेशन है, वो सारा डेटा आर में आ जाएगा और आर के अंदर फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं. ये तो बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं. मोर यू डिग मोर यू गेट. Tutorial means you can learn about R Studio, learn R. So there is a lot of things you can search online as well. After this, students check कर लो. Sir, is it possible कि हम R language Visual Studios पे भी run कर सकें? VS Code पे यूज कर सकते हैं. Visual Studio Code ये है VS Code. VS Code की ब्यूटी ये है कि आप इसमें कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जावा, आर, पाइथन, कोई सी भी लैंग्वेज हो यहाँ पे कर सकते हैं. फिर उसमें गिट रिपोजिटरी भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं. और इसके अलावा इसके अंदर जो हाई लेवल की जो चीज़ें हैं, डीप लर्निंग है और जीपीयू कंप्यूटिंग है, वो सारी की सारी यहाँ पर हो जाती है. क्योंकि अभी स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो मैं इसलिए इसको, अगर हम एआई पढ़े होते या लर्निंग कर रहे होते, डेटा माइनिंग कर रहे होते, फिर वहाँ हम VS कोड में करते, या फिर हम ये एक टूल है एनाकोंडा. एनाकोंडा भी एक सूट है, डिफरेंट पैकेजेस है और इन पैकेज तो एनाकोंडा भी एक सूट है, इसके अंदर VS कोड भी है, आर भी है, पाइथन, ऑरेंज और बहुत सारी चीजें. तो, लेकिन क्योंकि पाइथन बेस्ड है तो अभी हम पाइथन पे पहुंचे नहीं. आई थिंक मैंने पाइथन नहीं लिखा स्टेप्स के लिए, तो इसलिए हम लिमिट करेंगे अपने आप को ओनली टू आर एंड SPSS. और लैब की मैडम जो है, अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम करवाना चाहे करवा सकते. ओके, तो मतलब इसमें आजकल तो देखें ये हो रहा है कि ओरेकल क्लाउड है, ओरेकल एनालिटिक्स भी आ चुका है, IBM क्लाउड है, IBM एनालिटिक्स भी आ चुका है. IBM का सॉफ्टवेयर SPSS है, SPSS मॉडलर और SEM, इतने सारे टूल्स हैं IBM के, वो भी एक कंपटीटर. तो बिकॉज डेटा एनालिटिक्स वन ऑफ द हॉटेस्ट सब्जेक्ट, और डेटा एनालिटिक्स के पीछे जो है स्टैटिस्टिक्स होती है, तो जो लोग अच्छा स्टैट्स पढ़ लेते हैं तो वो अच्छे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं. बन तो सभी जाते हैं, कि ये एक मसला है. खैर, सर्टिफिकेशन के बगैर डेटा साइंस कर लेना वो एक अलग मसला है. ओके, एनीवे, फाइल्स नॉट फाइल्स, पैकेजेस में गए. इन पैकेजेस basically R work on packages. For example, if I say S cluster, for example, if I say some package, APE, analysis of phylogenetics and evolution. So this is a package. If I install this package, then I can have access to all the different things inside it. तो आप यहाँ पे देखें, आई थिंक आर के अंदर मोर देन 20,000 पैकेजेस हैं, और 20,000 पैकेजेस में हर पैकेज कोई यूनिक काम कर रहा होता है, कोई ना कोई नई चीज़ दे रहा होता है. इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है.
उसको पढ़ना आसान इस सेंस में है कि फंडामेंटल्स कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, अगर आप पेट्रोलियम में है तो पेट्रोलियम के काम करें, और अगर हम हार्डवेयर साइड पर हैं तो हार्डवेयर साइड में लिमिटेड है। आर का प्रॉब्लम ये है कि आर के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग इतनी आसान नहीं है, और आर के अंदर जीपीयू कनेक्ट करना, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्ट करके काम करना इतना ईजी नहीं है। इस वजह से हम इसको सिंपल पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। हायर लेवल पे जब जाते हैं तो उसके लिए आपको पाइथन पे आना पड़ेगा। पाइथन पे आए या कोई और हाई लेवल फोर्ट्रॉन पे चले जाएं। ये एनाकोंडा है जो कि हम नहीं करेंगे। पाई चार्म है, पावर शेल है, तो इसमें ये बहुत सारी स्पाइडर भी पाइथन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना चाहें, जितना टाइम देंगे उतना आपको चीज़ें। तो बट ये दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस मॉड्यूल। तो आई नेक्स्ट इज जो वट एवर द पैकेजेस यू वांट टू डू, फॉर एग्जांपल कार्ट, CART, कार्ट या companion of applied regression models, companion of applied regression data science data sets। तो अब हर एक के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, और आप इसको जो है वो हेल्प के जरिए से चेक भी कर सकते हैं। व्यूअर जो होगा उसमें नहीं, प्लॉट्स के अंदर आप प्लॉट्स व्यू कर सकते हैं, फाइल्स के अंदर करंट फोल्डर की जो फाइल्स हैं वो व्यू कर सकते हैं। तो यू कैन रिकॉर्ड योर, you can see your current files, what you have in the current folder. You can change your folder as well. So first I go back to this, getting started. So we see how to installation of R and what is R layout. Yeah, one more thing. If I go to tools, global options, then there are a number of settings. General setting, where is my R version installed? Where is the working directory? And do I want to save my data all the time as a R data file? और इसमें बहुत सारी और चीज़ें जो मैंने भी यूज करी, ज़रूरत नहीं। अपीयरेंस पे आ गया, font size is equal to 10. You can change the font size. If you want to work in contrast, then you can change contrast as well. तो इसमें combination और contrast दोनों available है। It's up to you which combination or contrast you want to use and work on. It can be connected with Git repositories. Where is your Git repository? अभी अगर आपने Git repositories पे काम नहीं किया, बस इस वजह कहाँ पे आपका कोड सेव हो रहा होगा वेब के ऊपर, GitHub के ऊपर कहाँ सेव हो रहा होगा, और बाकी तो इन शॉर्ट के so console window, also called the command window, at this time. So if I go back, this is the console window, and then we have editor window, this script window or editor window, this is the script window or editor window. हाँ, अब आ सकते फाइल पे जाएं, न्यू फाइल, आप देखें कितने डिफरेंट टाइप्स हैं। आर स्क्रिप्ट इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ ए आर स्क्रिप्ट और आर फाइल। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे कोई बुक है जिसके अंदर कोड भी इन्वॉल्व हो, आउटपुट भी आ रही हो, उसके अंदर आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट भी यूज कर रहे हैं, so then you have to use our notebook. If you want to make a file which can be converted into HTML format or Word format or PDF format, then you can use R Markdown. If you want to make web application, then you can use Shiny web app. Plumber मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ये API है जो कि कनेक्ट कर देगी आपके इस कोड को किसी और जगह से। C है, C++ है, फिर ये बहुत सारी चीजें हैं। इवन इट इज पॉसिबल कि आप आर के अंदर रहते हुए पाइथन पे काम करें, ये भी पॉसिबल है। और एसक्यूएल स्क्रिप्ट को, अपने एसक्यूएल सर्वर को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम, अब क्योंकि स्टैट्स का मॉड्यूल है तो हम स्टैट्स के हिसाब से देखेंगे। इसी तरीके से यू कैन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, प्रेजेंट प्रोजेक्ट, so you can create new project as well. Yeah, new project. What is a project? प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आप कोई
प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, किसी टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट्स लिखना है। अगर आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट्स लिखनी है तो आपके लिए नया प्रोजेक्ट बनाना होगा, और अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई डायरी है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। सो दीज आर दी ऑप्शंस। इफ आई गो टू न्यू प्रोजेक्ट, then it is what you want to do. You want to create an R package, application, or CCP, CPP, whatever. If I say no, I just want a simple R package, it will ask me what is the name of the directory and where I am saving it and create it. इसमें अभी मैंने एक ऑप्शन स्किप कर दिया कि क्या मैं अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर सेव करना चाहता हूँ या नहीं चाहता। प्लीज। So back to this. So it is easy to do addition, subtraction, and making graph on this working directory. Next thing is working directory. Working directory, WD. Oh, sorry. Get WD. Get working directory. So my current working directory is documents, but I want to change this working directory to another directory. So I will say set working directory. If I set working directory, so I will say, so for example, I will say कि मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे ES 306 A में जाना है, तो मैं ये कर दूँगा। लेकिन ये फोल्डर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ दे दिया। सो वी कैन यूज MSZTAJ desktop. So my current working directory will be set to desktop. If I check it now, if I see what is the current working directory, now it is changed to desktop. तो आपने यही करना होगा जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, तो आप एक फोल्डर बना लेंगे और आप उसको set WD के थ्रू उसको जो है वो, अब जैसे ये, अब ये देखें किसी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ब्रैकेट CART, क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन ट्री, ये मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है, और मैंने इसको कंट्रोल एंटर कर दिया, तो यहाँ पे वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। हाँ, ये प्रॉब्लम आता है, sometimes it says this package is not available for my present R स्टूडियो और R वर्जन। तो अब क्या करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ जाता है। एक तरीका ये होता है कि फिर यहाँ से ट्राई कर पैकेजेस और यहाँ पे लेते हैं कार्ट, इंस्टॉल में जाते हैं और यहाँ लिखेंगे कार्ट। हाँ, कार्ट नहीं है, कार्ट टूल्स है, क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन ट्री टूल्स। कहाँ से आ रही है? It is coming from the official repository which is called Tron. Otherwise, the other way is you can download the archive of this project and you can use from your hard drive, you can install it. But normally we always take from the repository of the Tron and install it, and also we install all the dependencies. इसको click करें, Peggy is taking classes, yes. So if your internet is not good, then it will take a bit more time. Otherwise, it can install. So जब ये इंस्टॉल हो जाता है, एवरी टाइम जब आपका कोई पैकेज इंस्टॉल हो भी जाए, तब भी आपको लाइब्रेरी करना पड़ता है। लाइब्रेरी और सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन कार्ट
जब ये करा, अच्छा ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, इसने कार टूल्स इंस्टॉल किया, इसके अदर पैकेजेस ऐश, HDRCT, रेनबो, FDS, ये सारे पैकेजेस जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी साथ में इंस्टॉल कर दिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि कहाँ गया, हाँ ये, तो लाइब्रेरी कार टूल्स करना भी ज़रूरी है, ये नया पैकेज। मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल ये शो करूँ, मैं कल कल तक काम कर रहा था, मल्टीप्लेक्स एक पैकेज है ग्राफ थ्योरी के ऊपर, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, मैंने ये करा, और एक डेटा सेट के ऊपर फुटबॉल का एक डेटा सेट था जो कि इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया। अच्छा मुझे ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग कहते हैं डेटा उठाया, हम डेटा नहीं उठा सकते, हम डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो उठाते नहीं है। तो G is the read graph and we can see the summary. Just I want to show the plot. तो ये इस तरीके से देखें कितना इजीली आपको ये ग्राफ मिल गया। इसमें ये जो डॉट्स हैं ये USA की स्टेट्स को शो कर रहे हैं, और जो कनेक्शंस हैं ये शो कर रहे हैं किस टीम, किस स्टेट का किस स्टेट से मैच हुआ था, फुटबॉल मैचेस। और इसमें थोड़ा सा होमवर्क किया जाए तो ये बहुत इजी है। आफ्टर फ्यू लाइंस यू कैन रीच दिस पॉइंट वेयर यू कैन कलर द ग्राफ based on some criteria or just color them randomly. तो ये बहुत इजी है कंपैरेटिव टू यूजिंग सी लैंग्वेज और C#, कि आप जो है इसके अंदर जो भी एक्टिविटी करना चाहें बहुत सिंपली आसानी के साथ कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर सॉरी माय इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग सम व्हाइल। आप लोगों को so you can easily define a variable as which is 4. You can define a times 5 is equal to 20. You can define a plus 10 equals to 14. I will not go to list, and so you can easily define column vectors like P is a C stands for column 3 4 5। आपको आवाज आ रही है और इमेज भी आ रही है? So B is equal to C. C stands for it's a column containing 3 4 5. You can define simple calculation 3 4 5, 3 at 4 at 5 divided by 3. Simply you can calculate the mean value of something, but don't put this. We can plot the data. For example, we generate random numbers. For example, x is equal to r norm. सर ये PDF आपको मिल, यस हाँ ये PDF आपको मिल, मैंने डाउनलोड करी है, बनाई नहीं है। So suppose this is 100 values and I say plot x, simply it is giving me the plot of this file. इसमें प्लॉट की बहुत बड़ी वैरायटी है। पहले यूज करते थे, फ्यू ईयर्स पहले हम यूज करते थे GG प्लॉट, अब आ गए हैं प्लॉटली। प्लॉटली ऐसी चीज है जो कि कॉमन है, पाइथन में भी है वो, और so we can define further improvements like for example main is equal to normal random numbers. Main stands for title. If I define the title, you can see this is the title here. We can define x label is equal to sequence, y lab equals to values. So if I say this, you can see sequence here, values there. प्रोग्रामिंग से फायदा ये होता है कि आपको ये काम जस्ट वन टाइम करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना। आपका डेटा सोर्स चेंज भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाँ एक चीज आ रही है, ओपन अ CSV फाइल,
to open comma separated values file. So it is simply, I say data 1 is equal to read.csv, and then I say c colon backslash users backslash my username backslash desktop backslash yes dash 306 p backslash data. Suppose this is my location. I know this is not the valid location, but just to give you an example, so you can use. अच्छा, एक problem ये भी है कि अगर मैं get wd करता हूँ, get working directory, आप देखें इसमें ये स्लैश आ रहे हैं, स्लैश स्लैश। जब भी आर में यूज करते हैं तो उसको स्लैश को बैक स्लैश करना पड़ता है। यू रिक्वायर बैक स्लैश नॉट स्लैश टू एक्सेस अ फोल्डर। बस ये एक थोड़ा सा आर के अंदर प्रॉब्लम है, और पाइथन में भी यही होता है कि बैक स्लैश करना पड़ जाता है, वरना वो एरर आ जाता है। तो इस तरीके से आप डेटा एक्सेस करेंगे, और उसमें जो भी फाइल है उसमें जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है वो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो और मेरे पास एग्जाम्पल काफ़ी है, लेकिन मैंने अभी इसको फॉर्मली इस फेस पे नहीं रखा हुआ कि मैं इसको प्रेजेंट कर सकूं। हम अभी यूरोपियन कमीशन पे काम कर रहे थे, यूरोपियन डेटा था डायबिटीज पेशेंट, और बड़ा अच्छा काम, ये सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर यूरोपियंस के साथ काम कर रहे थे बैठ के, यहाँ पे पढ़ाना पड़ा तो आ गया। So there are a lot of different things you can perform using R, and R is better for statistics and data analytics comparative to others. शहीद खान साहब, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। प्लॉटिंग हो गई, प्लॉटिंग का बहुत ही बेसिक्स पढ़ा हमने। अच्छा, हेल्प, हेल्प तो हाँ, हेल्प HEL R not. So when I type help, it will show me what is normal distribution, what is minor distribution, how to find different things in normal distribution, but I will not go to detail. हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, तो इसलिए अभी इसको हम फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। नो डेटा स्ट्रक्चर, या ये देखें, ये आप रिपीट कर सकते हैं, आप अपने स्पेयर टाइम के अंदर थोड़ा सा टाइम दें, 30 मिनट्स मैक्सिमम, और उसमें आप ये वाली पेज नंबर 6 की कमांड्स, वेक्टर कैसे बनाते हैं, वेक्टर के एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर में 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसका 5th एलिमेंट कौन सा होगा, 3rd एलिमेंट क्या होगा। सीक्वेंस अभी हमने नहीं पढ़ा, वैसे सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 1 एट a gap of 0.25, तो ये देंगे 0, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1, और सम करना है, डिफरेंस करना है। तो आप ये पेज नंबर 7 तक तो बहुत इजीली, 6 एंड 7 तक आप कर सकते। लिस्ट पे नहीं जाइएगा, लिस्ट मुझे पढ़ाना पड़ेगा, लिस्ट स्ट्रक्चर से होते हैं वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। हिस्टोग्राम बनाना है, इट्स वेरी इजी, आई हैव ओनली 2 minutes left. So histogram, if you want to histogram, it is simply HIST x is the data। अब देखें, ये सिंपली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत मेहनत करना पड़ती होगी, आई होप सो, कि हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे एक कमांड है और उसमें ब्रेक्स इज इक्वल टू 30 कर दें, तो आप देखें छोटे छोटे ब्रेक्स हो गए, 30 ब्रेक्स हो गए। इसमें जो है आई थिंक कलर इज इक्वल टू रेड, आए तो येलो पर रेड, हाँ कुछ गलत ही, कलर, यस, कलर इज इक्वल टू रेड, ये रेड हो गया। जो कलर आप है प्रॉपर, जो आप सही समझे, और उसके यहाँ पे नॉर्मली जो है प्रोफेशनली ग्रे चलता है। ओके, एनी क्वेश्चंस that you want to ask, because we have last minute to go and then we will meet next week. ये बेहतर है स्टेट्स। मैटलैब फ्री नहीं है, मैटलैब बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ तो लाइसेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना बाहर की दुनिया मैटलैब यूज इसलिए नहीं करती, एक्सपेंसिव है। वरना डेटा साइंस के लिए आर पहले और पाइथन सेकंड नंबर पे, या पाइथन पहले एज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और आर सेकंड, आर बाद में आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव लास्ट 20 seconds and to
मैं ये फाइल्स या एक्सेल की फाइल हो, एसपीएसएस की हो, एसक्यूएल की हो, जावा, जहाँ जो भी फॉर्मेट ऑफ डेटा फाइल है वो ओपन, बहुत वैरायटी है। ओके, मैं इस फाइल सीआर को सेंड कर देता हूँ। अच्छा, ये लेक्चर अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।